श्रीशनिरक्षास्तोत्रम् श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरसीमं चकारस्तवमुत्तमम्। ॐ अस्य श्रीशनिस्तवराजस्य सिन्धुद्वीपऋषिः गायत्री छन्दः श्रीशनैश्चरदेवता श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। शिरसि सिन्धुद्वीपऋषये नमः, मुखे गायत्री छन्दसे नमः, हृदि श्रीशनैश्चरदेवतायै नमः, सर्वाङ्गे श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे विनियोगाय नमः। शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु, कोटराक्षो दृशौ पातु शिखकण्ठनिभःश्रुति, घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु, स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु, सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु, गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः, पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः, रक्ष्यामेतां पठे नित्यं सौरेर्नामाबलैर्युतं, सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। श्रीशनैश्चरस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः, कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः, नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च, पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा, वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः, पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र, सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि, पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा, प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च, सरस्वती पुण्यजले गुहायां, यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्, गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य, त्राता हरेशो हरते पिनाकी, एकस्त्रिधारिज्ञजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते, नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च, पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः, प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः, कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः, सौरिः शनैश्चरो मन्दः, पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीपञ्चमुखी हनुमत कवच। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचन्द्रो देवता, सीता इति बीजं, हनुमानीति शक्तिः, हनुमत प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं, दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानमरुचा, हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधाकुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं, खट्वाङ्गं फणिभोरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय
सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षड्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 व षट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पर्यंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं चं जं झं यं टं ठं डं ढंगणं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं सं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तम कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्यो नमस्तथा द्यावा पृथिव्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रिश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कक्ष्याय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः
तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतामानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुज। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरसीमं चकारस्तवमुत्तमम्। ॐ अस्य श्रीशनिस्तवराजस्य सिन्धुद्वीपऋषिः गायत्री छन्दः श्रीशनैश्चरदेवता श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। शिरसि सिन्धुद्वीपऋषये नमः मुखे गायत्री छन्दसे नमः हृदि श्रीशनैश्चरदेवतायै नमः सर्वाङ्गे श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे विनियोगाय नमः। शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्ष्यामेतां पठे नित्यं सौरेर्नामाबलैर्युतं सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। श्रीशनैश्चरस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरेशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीपञ्चमुखी हनुमत कवच। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानमरुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधाकुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभोरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं
श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षड्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 व षट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पर्यंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं चं जं झं यं टं ठं डं ढंगणं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं सं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तम कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्यो नमस्तथा द्यावा पृथिव्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रिश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कक्ष्याय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्रिशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतामानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुज। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरसीमं चकारस्तवमुत्तमम्। ॐ अस्य श्रीशनिस्तवराजस्य सिन्धुद्वीपऋषिः गायत्री छन्दः श्रीशनैश्चरदेवता श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। शिरसि सिन्धुद्वीपऋषये नमः मुखे गायत्री छन्दसे नमः हृदि श्रीशनैश्चरदेवतायै नमः सर्वाङ्गे श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे विनियोगाय नमः। शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्ष्यामेतां पठे नित्यं सौरेर्नामाबलैर्युतं सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। श्रीशनैश्चरस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरेशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीपञ्चमुखी हनुमत कवच। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानमरुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधाकुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभोरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं
श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षड्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 व षट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पर्यंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं चं जं झं यं टं ठं डं ढंगणं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं सं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तम कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्यो नमस्तथा द्यावा पृथिव्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रिश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कक्ष्याय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्रिशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतामानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुज।